our channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. Today we're gonna discuss your SBI PO examination paper, and that is your class 4, where we had done in the last 3 classes, which is your the reasoning, a part of the reasoning ability section 1 of the question paper, which is the State Bank of India Probationary Officer examination paper, and that is based on the memory. Basically, we had done in the detail how you have to apply and what are the vacancies that we have in the SBI PO, and all the relative information that is being required, and we had done that. Coming towards today's class, we'll start discussing to continue with the section 1 reasoning ability. That is the 4th class, where 3 in the 3rd classes we had done. You can go ahead. Today we'll start discussing about the 6th question of the session. The 5th question we had done in the last classes. So here we go. So the 6th question we have: Ashok started walking towards south. After walking 50 meter, he turned a right turn. He took a right turn and walked 30 meter. He then took a right turn and walked 100 meter. He again took a right turn and walked 30 meter and stopped. How far and in which direction was he from the starting point? The options were 50 meter south, 150 meter north, 180 meter east, 50 meter north, and none of these. So let's get started with the same and we'll solve it out. So here we go. Ashok started walking towards south. After walking 50 meter, after walking 50 meter, he took a right turn and walked 30 meter. He then took a right turn and walked 100 meter. He again took a right turn and walked 30 meter and stopped. How far and in which direction was he from the starting point? Options were: first one is 50 meter south, second option is 150 meter north, third option is 180 meter east,
fourth option is 50 meters south, and the fifth option is none of these. So let's get started. The question has been said, Ashok started walking towards south. अशोक ने साउथ की तरफ चलना शुरू किया. आफ्टर वॉकिंग 50 मीटर, 50 मीटर के बाद उन्होंने राइट टर्न लिया और फिर 30 मीटर चले. ही देन टुक अ राइट टर्न, उन्होंने फिर से राइट टर्न लिया और फिर वो 100 मीटर चले. ही अगेन टुक अ राइट टर्न, उन्होंने फिर राइट टर्न लिया, फिर वो 30 मीटर चले और रुक गए. तब आपको बताना है कि वो किस डायरेक्शन में है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से. As I told you of the options as well. So yes, we'll go for it and we'll solve that. So in the same way, if we will be going to find it out, so we have as such follows, that he took light from, that is in the which direction that we have. So of course अशोक ने पहले साउथ की तरफ चलना शुरू किया. We'll go for it. साउथ की तरफ चलना शुरू किया. उसके बाद उन्होंने आफ्टर वॉकिंग 50 मीटर he took a right turn and walk 30 मीटर. पहले तो वो राइट इधर चले, उसके बाद साउथ में चले, उन्होंने 50 मीटर चला, उसके बाद उन्होंने राइट टर्न लिया. ओके, 50 मीटर चला, फिर राइट टर्न लिया. तो राइट टर्न उन्होंने यहाँ लिया. सो इट विल बी, दिस इज़ द 50 एंड ही टुक राइट टर्न एंड वॉक 30. सो ये 50 है, ये 30 है. देन उसके बाद वो चलने के बाद ही देन टुक अ राइट टर्न एंड वॉकड 100 मीटर. तो उसके बाद वो फिर से 100 मीटर उन्होंने चला, तो राइट टर्न लिया, ये 100 मीटर है, 100 मीटर चले वो. उसके बाद ही अगेन टुक द राइट टर्न एंड वॉक 30 मीटर एंड स्टॉप. सो फिर उसके बाद जब वो सीधे जा रहे थे तो उन्होंने राइट टर्न लिया 30 मीटर और उसके बाद वो रुक गए. तो बेसिकली यू हैव टू आंसर इट आउट. तो ठीक है, 30 मीटर चले, तो ये आपको पता है कि 30 मीटर चले तो डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंच गए. ये 50 है, ये इन्होंने 100 चला था, तो 100 माइनस 50 इट विल बी 50. अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं. तो डायरेक्शन की बात है कि वो किस तरफ डायरेक्शन में जा रहे हैं. दे आर गोइंग फॉर द नॉर्थ डायरेक्शन, क्योंकि उसके बाद उन्होंने टर्न लिया है. तो दे आर गोइंग टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन. नहीं, दे आर गोइंग फॉर द नॉर्थ डायरेक्शन. So 50. Okay, this is the options I have right as the wrong one. 50 meter. This is now, sorry, दो बार हो गया. So the 50 meter north direction it will be here. When you are going towards upward, it will be north. 50 meter north. Now we'll go for another question. That is the another important one. Is the 7th question of the session. So I just write it down here. 50 meter north direction that they are moving. Now the another question is the 7th question, and that is we have here. So the 7th question we have, how many meaningful English words can be made with the letter D, L, E, I using each letter only once in each word? Options were none, 1, 2, 3 and more than 3. So let's get started and we'll be solving it out as well. So here we go. How many meaningful English words can be made with the letter D, L, E, I using each letter only once? Here for the same only once you have to do once in each word here.
in each world. The options we have none. Second option is 1. Third is your 2. Fourth is your 3. And the fifth is your more than 3. More than 3. So let's get started with the seventh question here, which is of course being the important one. So here we go. So how many meaningful alphabets that will be gone, and that is towards that we have to find out. So that is will be going to find it out, that we have following words. So it will be finding when we are going to further solve this particular question. So let's find it out कि कितने words बनते हैं. Okay, so here we go. So ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है कि कैसे बनेगा, बिकॉज दिस इज़ द इजी वन ऑफ कोर्स. इस क्वेश्चन की बात करें, हो सकता हो कुछ बच्चों को एक्सप्लेनेशन आई डोंट नो क्लियर होगा नहीं होगा, आई डोंट नो अबाउट दैट. तो सबका अलग अलग मेंटल लेवल होता है, कुछ लोगों को देखते ही समझ में आ गया, कुछ लोगों को नहीं आया होगा. उनके लिए मैं क्लियर कर देती हूँ डियर. ये 30 मीटर ये जब मूव आउट किए हैं, तो अब ये देखो ये 50 मीटर नीचे है और ये यहाँ पे 100 मीटर चले थे, तो ये 50 मीटर जो है ये डायरेक्शन है. तो फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ही इज़ 50 मीटर फार अवे एंड द डायरेक्शन इज़ नॉर्थ, कि वो नॉर्थ की तरफ है. ठीक है, दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर. ओके, सो कहो तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर सोल्यूशन में, क्योंकि कुछ बच्चों को शायद क्लियर नहीं होगा. फ्रॉम starting point he is 50, from starting point he is 50 meter far and direction is north. Okay, this is the solution here. Now we go for another one, and that is the another important question that we have. So let's get started with the same. So let's get with the 8th question, and ये 7th question बहुत ईजी है, आपको सॉल्व करना है. अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस आप भी करो. ये तो बहुत इजी वाला है, मैंने इसीलिए टफ क्वेश्चन दिया ही नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कितने बच्चे कर पाएंगे कितने नहीं कर पाएंगे. तो अकॉर्डिंग टू द easiness of this particular question I had given you. So let's get go ahead with 8th question. The question is, in a certain code, temporal is written as OLS MPSB, and how is considered written in that code? You have to answer it out. So let's get started with the same here. So we'll be going for it. So 8th question, that is, in a certain code, temporal is written as OLS MVSB. How is considered written? How is considered written in that code? So the options were, the first option we have R M N B
SFEJ. The second is BNMRSFEJ. The third one we have RMNBJEFS. Fourth one TOPDQBCH. And the fifth one is none of these. So we'll have to answer it out, and let's go for the same. So here we go for it. I think this is also easy. मैंने ये रीजनिंग क्लास में आपको समझाया था, बट नो वरी, हो सकता हो कुछ बच्चों को नहीं इन्होंने क्लासेस किए हो तो शायद ना पता हो. विल गो फॉर इट. So here we go for the same, that is we'll be going for the solution here. So here we go for it. The first we'll go and find it out for the temporal, and that is your, तो उन्होंने बोला है कि टेम्पोरल जो है टेम्पोरल जो वर्ड है दैट इज बिलोंग्स टू ओल्ड्स OLDSMBSP. So here in terms of it जो आपका गया है, so starting with the same L जो है वो आपके L के बाद M आता है. दिस इज +1. ओके, फिर A जो है A के बाद आपको B आता है +1. R के बाद आता है S, तो दिस इज ऑल्सो +1. एंड देन O के बाद क्या दिख रहा है हमको? P, तो दिस इज ऑल्सो +1. नाउ कमिंग टू P में एक माइनस करो. P से एक पहले आता है O, -1. M से पहले एक माइनस करो तो आता है L. E से एक माइनस करो तो विल गेट योर D. वी आर द फाइंडिंग द पैटर्न. तो S से एक माइनस करो, T से एक माइनस करो तो विल गेट S. ओके, तो दिस इज हाउ द पैटर्न इट इज़. सो लेट्स गो फॉर इट. हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे. इस पैटर्न से हमारा टेम्पोरल और MBSP निकला है. तो we'll go for finding it out. The another word that we have is similarly consider को. So we consider how you have to find out RMNBS. okay, so how you have to find it out now. So just to go for it. एक्चुअली मैंने फाइंड आउट कर लिया था. आई जस्ट राइट इट डाउन. आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू वन मोर एवर. तो C है. ओके, सो आई विल स्टार्ट विथ I है. तो I में +1 अगर हम करते हैं विल फाइंड आउट द लास्ट वर्ड, दैट इज योर J. ओके, सो +1 करेंगे. सेम फॉर द D. दैट इज D में अगर हम +1 करते हैं D में +1 करेंगे विल गेट E. E में अगर हम +1 करेंगे तो विल गेट F. एंड R में अगर हम +1 करेंगे तो वी विल गेट S. ओके, सो सेम हियर. S में हम अगर 1 माइनस करेंगे विल गेट दिस. N में अगर हम 1 माइनस करेंगे विल गेट M. O में हम अगर 1 माइनस करेंगे विल गेट N. C में अगर हम माइनस करेंगे सो विल गेट D.
So here that is your the solution, and how you have to solve it out the pattern that we have. Accordingly you have to solve it out. So here we end up with this only. So here we gonna end up with, thank you, hope you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion on the comment box. Please like, share and subscribe so that many and maximum people can get the information at once, and over there you can also enjoy the video as well. Thank you, hope you enjoy this video. Please like, share and subscribe our channel, so because it is very important. Thank you.